Assalamu alaikum, dear students. Today we are learning 7 C's. Um, you know that when you want to convey your message, so it is very hard to convey the message. It's from the sender to receiver is one of the biggest problem to convey right message or effective message. So 7 C's means effective, written, and oral message. Okay, if the sender wants to convey any message, so how can this message be effective? This effectiveness is actually called 7 C's. So we've got the list of 7 C's to, or you can say that, well, these are the principles of for written and spoken communication. Okay, what are they? Let's learn in this class, and I hope that you will be able to learn each and every point clearly. The very first word is, so we have these 7 C's for, if effective message. Number one, completeness, conciseness, clarity, correctness, consideration, courtesy, and concreteness. Suppose when the sender or writer wants to send his message, so what to do? He will have to bring this order: the writer, message, reader, speaker, message, listener. It means writer will write some message and reader will accept it. Speaker will, speak some message and listener will accept it. So how can this message be effective? For this purpose, we need to learn 7 C's or effective writing. So the very first word is completeness. Let's learn. Completeness means it contains all facts or data that the reader or listener needs for the correctly desired. What is the all facts? It means that when you are giving complete message, when the sender wants to give message, so well, he will have to keep the receiver in his mind, and he will have to filter the receiver that what to do. Means he must know the background, the viewpoints, needs, experience, attitude, status, emotions. All these things must be known by sender. If sender miss anything, it means that will not be able to convey his message thoroughly. So completeness means nothing should be missed. Completeness means nothing should be hidden. Okay, so now we have these 3 points. These are the benefits that we will learn for the standard point of view. Number one, sender must think that I should bring desired result. Desired result. जो मेरे result है मुझे जो बेहतरीन result मुझे चाहिए वो है. Second, build better goodwill. If he is unable to build better goodwill in the eyes of receiver, so it will be his message is not good. Number two, give effective and complete information that nothing is missing. If the sender wants to give message, so he should keep one thing in his mind, that I will have to give complete information. If one thing is missed or a little thing is missed, it means well he will not be able to give right message. For this purpose, in a nutshell, we discuss the very first thing is called provide on information. Provide on information. What is on information? If the sender brings all WH questions, 5 WH questions in his mind, so these questions can be asked by a receiver. These questions can be the most necessary questions. So he will be able to reply all these answers. It means that the sender must reply 5 WH questions. Okay. Number two, answer all questions asked. Suppose sender wants to write and he wrote 5 WH questions. But one question he thought that well, it is not good. It is not necessary. So it is his fault. But why he is missing this information? Why he is not going to write this passage? Why he is becoming biased? So he must reply all the which questions asked by the receiver. Okay, nothing should be hidden. Don't consider anything. Okay, if you consider anything, it means your image will be called bad image. Fine. The third biggest thing is called give something extra when desirable. What to do? That completeness also means that when you are done with your message, that it is complete. Now you must write some extra information. Okay, extra information or desirable information.
It is, according to you, it is something extra. According to you, it is desirable. Okay, it is complimentary from your side. That if I give this information, my receiver will be happy to me. So that's why must mention time, day, place, people, category, product, etc. Fine. So this is called completeness. I hope that you got this right. The second word is called conciseness. What is conciseness? Conciseness means if you are giving complete message, but your message is full of wording, means wordy message, too much information, and most of these informations are worthless, vague, begar. So that will not be called concise. Concise means you will have to bring your message precisely. आपको अपना मैसेज प्रिसाइज करना है, छोटा करना है, शॉर्ट करना है. कंसाइजनेस का फायदा क्या है? इट सेव्स टाइम ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर. रिसीवर को भी टाइम बच जाएगा, सेंडर का भी. नंबर 2, इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी वर्ड्स. इससे क्या हो जाएगा कि आपके अननेसेसरी वर्ड्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. देखिए, अननेसेसरी वर्ड जो बेकार के या आपका तकिया कलाम है, you are habitual of speaking some words again and again, so these words will be eliminated. Third, stand on important ideas. अपने important ideas पे जो है वो रहे, कोई भी यहाँ वहाँ की बातों पे नहीं आए. अगर आपने यहाँ वहाँ की बातें शुरू कर दी या अपने अल्फाजों को बड़ा तरह से कर दिया, एक वर्ड को बार बार कह रहे हैं, so concise. Don't provide unnecessary wordy and vague sentences. देखिए यहाँ पे wordy, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि आप बार बार कुछ बातें कर रहे हैं. वेग सेंटेंसेस बिल्कुल बेकार बातें, अननेसेसरी, जो कि काम की नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं लानी, वरना आपका मैसेज जो है वो कंसाइज नहीं. आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट. इट कंसाइज मींस टू प्रिसाइज द सेंटेंस, टू शॉर्ट द सेंटेंस, which is very much necessary for the receiver, because receiver does not have much time to listen to you. So that's why if you think you have fixed 10 minutes, so you have to convey your message in 10 minutes. It should not be 11. It should not be 12. It should not be 15. Right? So that's why just in 10 minutes you will have to convey the message, and you will have to apply the rule of conciseness. What is nutshell? In a minute, word expressions. Word expression means essentially at this time. So ये तीन जुमले हैं, तीन words हैं. So at this time से बेहतर अगर मैं लिख दूँ now, it is good. In due course word ही है. अगर मैं इसके लिए soon लिख दूँ, so it's good. Suppose, please find attach the list you requested. Simple as that. The list you requested is attached. Right? So I think in a nutshell, you can bring um, yes, some extra words. So कि आपके पास कुछ नए अल्फाज लेकिन short है तो वो लिखें. Number two, include only relevant material. What is relevant material? Relevant material means का मतलब ये है, इसको मतलब उल्टा कहूँगा कि don't bring unrelevant material. Unrelevant material ना लाए. Stick to purpose of the message. आप अपने मैसेज पे रहें या हवा की बात में. Delete irrelevant words or rambling sentences. यहाँ वहाँ के जुमले, यहाँ वहाँ के sentences को मत लाएं. Don't repeat the words said before. Suppose if you have spoken one sentence before, don't break it again. It is not discussed. You can say, as I have discussed about. जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया, तो वो समझ जाएगा. Avoid long introduction, unnecessary explanation, excessive adjectives. Most of us try to use excessive adjectives, so many adjectives, unnecessary explanations. So this is not good in writing and speaking. That's why be cautious, because as I told you that you have fixed time. इसीलिए नहीं करना. Don't do the work technically and concisely. ये आपके अंदर एक कला होनी चाहिए. Okay, it must be a skill in you that technically काम करना है, और concise काम करना है, टाइम को देखते हुए. Right? And then omit outdated tired expression. Outdated expression से तो भूल होता है. You think, well, you were using this word again and again, and you were respected before, so don't break it. It might be applied by everyone. देखिए, अगर आपको लगता है कि आप इस एक्सप्रेशन से बहुत कामयाब हो गए थे पहले, लेकिन हो सकता है अभी ये जो जुमला है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये आपका जुमला मशहूर हो गया, हर किसी ने अप्लाई कर दिया, अब ये बीमारी है. So that's why don't bring meaningless words or outdated expressions. I hope you got this point. The third biggest thing is called consideration. What is the meaning of consideration? Mean someone listens to you. If someone is doing some work, he somehow conveys
conveys to you. He somewhat somehow well um, gives concentration on you. तो कैसे होगा ये उस वक्त होगा when you are applying the you attitude word. You attitude क्या है? It means if you are uh, yes, if you are praising, admiring, or giving benefits to Mr. You, why will the person listen to you when you are just praising yourself? Okay, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, it's not good. So give benefits to Mr. You. अगर आप मिस्टर यू की तारीफ करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो खुद आपकी तरफ से करवाएगा. सही. अगर आप अपनी तारीफ करेंगे तो no one will listen to you. No one will listen to you. Why? Because you are just praising yourself. Okay? And self-praise recommendation बुरी बात होती है. Self-praise recommendation means अपने मुंह में ये बुरी बात होती है. Don't lose your temper when you're discussing. जब आप यू से बात कर रहे हैं तो अपना तो गुस्से मत आए, टेम्पर मत खोएं. नंबर टू, डोंट एक्यूज द रिसीवर. जब आप रिसीवर की बात करें आपको लगता है वो गलत है, उसको इल्ज़ाम मत दें. ऐसी बात करें जो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे. ओके, गिव द बेनिफिट्स ऑफ हिम और हर. डोंट जज द रिसीवर विदाउट नोइंग फैक्ट्स. ठीक है, आपको पता नहीं कि उसने किया नहीं किया, आप बिना वजह जो है उस पर जो है अपनी बातें कर रहे हैं. इट्स नॉट गुड साइन. तो वेल रिसीवर को सुनना है कि हु इज रिसीवर. रिसीवर ने जो बातें की हैं आपको लगता है कि वो गलत भी है, कुछ भी है, गिव बेनिफिट्स टू हिम. फाइन, फैक्ट्स बताने हैं. नंबर 4, हैंडल द मैटर फ्रॉम द रिसीवर्स पॉइंट ऑफ व्यू. रिसीवर किस तरह चाहता है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ रिसीवर. सो यू विल हैव टू bring this thing in your mind. Hey receiver, what is the demand of receiver, what does he want. So you will have to fulfill the requirement of the receiver according to him, not by you, not according to you. Okay, तो अपने तरीके से करना है, लेकिन उसके मुताबिक करना है. रिसीवर को अपने दिमाग में पूरी कंप्लीट जगह देनी है, 100% जगह देनी है, तब जाके आप उसको समझ पाएंगे. ओके, देन in nutshell we discuss that focus on you instead of I and we. If I say, अगर मैं I की बात करूँ, we की बात करूँ, no one will listen to me, no one will listen to us. But most of have this fault. And in business English, in business conversation, you will have to praise or focus on Mr. You rather than you, I and we. Okay? You attitude focus on audience oriented message because it benefits them. When we give message to Mr. You, we don't know that what is actually the way of giving message to Mr. You. So, and if we just praise ourselves, it means our message has been respected. So don't exaggerate your ideas, but respect the ideas of the audience. Give respect to the audience. Give respect the ideas of. Give respect to the ideas of the audience. Okay? Don't exaggerate it. कभी भी इस चीज को एक बात करें, एक चीज 1 रुपए की है तो 1 रुपए की तारीफ. सही. एग्जीक्यूटिव को आइडियाज को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर गिविंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बट यू आर गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये नहीं करना. यू एटीट्यूड विल यू एटीट्यूड ऑलवेज ब्रिंग्स द डिजायर्ड रिजल्ट. व्हेन यू आर गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ यू, इट विल ब्रिंग 100% डिजायर्ड रिजल्ट. एग्जाम्पल दे देते हैं, एक एग्जाम्पल में बताऊंगा. I am delighted that we will easily shop by extended hours. We will easily shop by extended hours. Okay? अच्छी जुमला है. But it is more polite, more better. It is better than this one. You will be able to shop late evening with extended hours. You will be able to. If you have given respect to Mr. You, now he will think, wow, that I am given respect. Wow. Okay? So he will listen to you. I hope that you got this point. Okay, after that we have concreteness. What is the meaning of concreteness? पुख्तगी होना, strongness, specific, definite, vivid. Okay, if you want to convey your message with vivid, specific, definite, strongness, so what to do? You have to cut the vague words or general opinions. कंक्रीट का मतलब क्या होता है कि वेल आपको जब पुख्तगी लानी है अपने जुमलों में, तो आप उस चीज़ को करें which is applied by the world, which is applied by each and every businessman, which is not only applied by not only applied by your area,
by you, सिर्फ आपके जरिए आपका एरिया जो है उसको अप्लाई कर रहा है वो नहीं होता. So what to do for business people, it is necessary they will have to go through denotative meaning. Okay, denotative meaning means dictionary meaning. तो डिक्शनरी में वर्ड हैं वो बिल्कुल पुख्ता वर्ड हैं, उनको बाकायदा जो है उसको अच्छी तरीके से भी देख लिया गया है. But connotative meaning which is spoken in your um, house, okay, or in your area, your street language is not allowed. Street language not allowed. ठीक है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज अलाउ नहीं होती. तो आपको इसके लिए करना है डेनोटेटिव मीनिंग की बात करनी है जो कि डिक्शनरी बेस्ड होने चाहिए. डिक्शनरी बेस्ड मीन्स which are well they are working words, they are strong words. So that's why strong words का इस्तेमाल करना है. connotative means conversational words. ठीक है, डिक्शनरियल वर्ड्स, कन्वर्सेशनल वर्ड्स. कौन से बेहतर है? डेनोटेटिव, डिक्शनरी बेस्ड वर्ड पे काम करने हैं. ओके देन misunderstanding of words produce prejudice. Sometimes we bring misunderstanding in our conversation or by dealing with someone. So that time misunderstanding को हटानी है क्योंकि वो हमेशा ट्रेजेडीज लाती है. आपके जुमले पुख्ता नहीं होते फिर उसको. मिसअंडरस्टैंडिंग ऑलवेज ब्रिंग ट्रेजेडी. ये एक बड़ा अजीब जुमला है. So that's why don't bring misunderstanding in your sentences, in your dealing. Okay, आपस की डीलिंग में भी आपको नहीं लाना. बिजनेस प्रोफेशनल यूज कंक्रीट फैक्ट्स एंड फिगर्स. ये तो जरूरी है. Business people never um, discuss or never will do dealing um, with without knowing facts. They know the facts. They know the hundreds of facts. So they do dealing with right and concrete facts and figures. ठीक है? तो इसको अपने दिमाग में रखना है. After that, use specific facts and figures. Put action in your words. Choose vivid image building words. Okay. So use specific facts and figures. आपको मैंने पहले ही बता दिया that no vague sentences नहीं अलाउड. जैसे कि पाकिस्तानी टीम वाला मैच कौन सा मैच जीता नहीं पता, मैसेज जो है थोड़ा सा वो हम देखें कि सब मैचेस तो हार गए, कौन सा मैच जीता है. तो हम कंक्रीट में कहेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम won the match in 1992. Okay, we are satisfied with the sentence. Okay, बाकी एग्जांपल्स आप खुद देख लीजिए क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं है. Okay, now put action in your words and choose vivid image words. Vivid image words याद रखिएगा. Well, when you are bringing right words or vivid image words, okay, they will affect on the reader. They will affect on the audience. If you're bringing all those of words okay, which are not bringing vividness in the sentences, so it means they will distract your message. सही. तो इसलिए जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है ऑनलाइन प्रेजेंटेशन स्टार्टेड. हमने स्टार्ट की लेकिन इससे बेहतर अच्छा पैसिव वॉइस इस्तेमाल नहीं करना. यूज एक्टिव वॉइस इन योर सेंटेंस. फाइन. एक्टिव वॉइस सेंटेंस, एक्टिव वॉइस जो है ये बेहतर सेंटेंस है, पैसिव वॉइस से बेहतर है. तो इसीलिए कंप्लीटनेस एक्टिव वॉइस की मिसाल देता है और पैसिव वॉइस से होता है. So BBSUL has started online classes. It is active voice, understandable, so this is good. Online classes have been started. ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पे जोर नहीं हो रहा. So that's why BBSUL has started online classes. Subject has been emphasized in this sentence. I hope you got this word. Okay, उसके बाद हमारे पास clarity. What is the meaning of clarity? Clarity means clear. Okay, बिल्कुल clear क्या मतलब है? What is the meaning of clear? Means from sender's head to the receiver's head, you are sending the message accurately, thoroughly, clearly, पूरी सही तरीके से मैसेज को सेंड करना है सेंडर के हेड से रिसीवर के हेड तक. फाइन. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. इट इज नॉट सिंपल बट नॉट इम्पॉसिबल. ये सिंपल नहीं है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है कि आप अच्छी तरीके से मैसेज भेजें, बिल्कुल रिसीवर के दिमाग के निकाल मैसेज भेजें. ओके, जब आप मैसेज डीलिंग या लिखने की हद तक करते हैं, when you start business writing, so it may be the part of you first time, but you will be happy to solve. आप इसमें आदी हो जाएंगे. Everyone has its own unique interpretation, ideas, experience associated with words. सही. So clarity demands what? That you know that everyone has unique expressions.
interpretations, but you will have to give your idea. You will have to share your interpretation, your ideas, your experiences associated with words means clear words. Okay? And clarity demands choose precise, concrete, and familiar words. The words which you, the words which you chose from the dictionary, but it is unfamiliar in English. It is unfamiliar in your business dealing. Okay, so this time don't use it. Don't try to impose the words on other people. Don't try to impress people by your words. Use familiar words if you want to be सक्सेसफुल इन योर डीलिंग. देखिए अगर आप डीलिंग में इंग्लिश में राइटिंग में सही होना चाहते तो आप फेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करें मतलब जो कि मेरे लिए आपके लिए कॉमन वर्ड्स हो लेकिन डिक्शनरी में हो. दोबारा से बताओ प्रिसी वर्ड्स कंक्रीट वर्ड्स ऐसे वर्ड इस्तेमाल करें जिनकी एक मतलब हो जिनको सब लोग जानते हैं. एक वर्ड के 100 मीनिंग है. You know very well that English is very vast language. Okay, so that's why it has so many meanings. Okay, इसके बहुत सारे मतलब हैं. So that's why choose those words के which has familiar and concrete meanings. ऐसे वर्ड इस्तेमाल ना करें जिनके मतलब अलग अलग हो. Number two, use specific familiar language. When you have a choice between long word and short word, use short word. ये अपने दिमाग में रखें. सही कि अगर आपके पास दो वर्ड्स हैं एक बड़ा वर्ड है एक छोटा वर्ड है तो कोशिश करें छोटा वर्ड इस्तेमाल करें. And use synonyms instead of Latin terms. ये एक बात बता रहा हूँ लैटिन टर्म्स बहुत सारे हैं बट यूज साइनोनिम्स. अगर आपको लगता है कि इसके लैटिन वर्ड ये है लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके साइनोनिम्स भी मेरे पास मौजूद हैं तो ब्रिंग साइनोनिम्स बट विच शुड बी क्वाइट कॉमन विच शुड बी क्वाइट कंक्रीट विच शुड बी फैमिलियर. ठीक है. आई होप क्लैरिटी आपको समझ आ गई क्या चीज़ है. ओके जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लिस्ट है कुछ मैंने कोशिश की है यहाँ पर लिखने की. फैमिलियर वर्ड्स और पोटेंशियल. फेमिलियर वर्ड्स अबाउट है. ठीक है लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं लैटिन वर्ड में circa आफ्टर फेमिलियर वर्ड है सब्सिक्वेंट. सही प्रेजेंटिव वर्ड है जो कि अनकॉमन है. होम आपको पता है लेकिन डोमिसाइल प्रेजेंटिव मतलब भी लैटिन वर्ड इस्तेमाल होता है तो फॉर एग्जांपल ये हम सब जानते हैं बट ई जी इट इज बोलने में तो होता ही नहीं है लेकिन लिखने में हम लिखते हैं पे. सही तो पे हमारे पास फेमिलियर है लेकिन रेम्यूनरेशन सही ये हमारे पास जो है वो उसमें आ रहा है. इनवॉइस ये मेरे पास कॉमन वर्ड है बट स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ये बड़ा वर्ड है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग वर्ड और शॉर्ट वर्ड में देखना है कि कौन सा वर्ड था. आई होप क्लैरिटी क्लियर हो गया आपको. ओके क्योंकि क्लैरिटी को क्लियर तरीके से समझा दिया मैंने. ओके so now construct effective sentences and paragraphs. Okay, I think it is not necessary, but you can use it because अभी तक टाइम नहीं है. But you use 17 to 20 words when you're writing. Average writing में आपको इतनी होनी चाहिए. Unity means that you have one main idea and other ideas must be close related to it. ठीक है आपके पास ये होना चाहिए. So you can see that you know what is this. उसके बाद place the correct modifier. Modifier जब आपने सीखे तो modifier आपके बिल्कुल clear होने चाहिए, correct होने चाहिए. If your modifier is giving uh, different words, different meanings. Okay, so well, that you know, it is unclear modifier. We have discussed in the last class dangling modifier हमने discuss किया था तो आपको सही modifier के बारे में discuss करना है. Okay, जैसे कि suppose मेरे पास example है being an excellent lawyer you can surely help us. ये एक modifier जुमला है तो हम इसको सही कर लेते हैं as you are an excellent lawyer I am sure you can help us. Okay, I hope that it is clear to you now. उसके बाद मेरे पास एक जो 7 चीज में एक और जो वर्ड है जो सी है बहुत इंपॉर्टेंट वो है courtesy. What is courtesy? Courtesy means akhlaq, ethics, okay, manners, respect the readers and their feelings. So what is courtesy means that when you are not giving good, when you're not showing good ethics, when your manner is called considered ill manner. So do you think that well people will come to jail you? People will come to jail with you? No. Courtesy means akhlaq, अच्छे akhlaq. Okay? So it is possible when one applies you attitude. ये कब होगा जब आप you attitude की बात करेंगे? It is when you benefits you. So that time you will automatically use a courtesy in your sentences, in your language. जब आप मिस्टर यू की बात करेंगे तारीफ करेंगे उनकी
फायदे की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि वेल इसमें मैं यू एटीट्यूड में क्या ला रहा हूँ, खारसी को ला रहा हूँ। यू विल यूज गुड टैक्टिक्स, you will use yes highly respected words, so उस आप समझेंगे। यूजिंग पोलाइटनेस वर्ड्स लाइक थैंक यू और प्लीज, ये तो हम करते रहते हैं, बट इस अच्छी अच्छे वर्ड समझें। थैंक यू भी अच्छा वर्ड है, प्लीज भी अच्छा वर्ड है, लेकिन कोशिश करके है। सपोज केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, जैसे कि आप इफ यू आर नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, अगर आप लोगों की फीलिंग्स की केयर नहीं कर रहे हैं और यू थिंक दैट योर मैसेज इज गुड, तो नहीं हो सकता। तो क्या करना है कि भाई आप जब रीडर्स के मैच जो है उनके उनकी केयर करेंगे, रिसीवर्स के जो है या ऑडियंस को आप सुन जो है देखते हैं कि फिर आपका मैसेज गलत जा रहा है, सो इट विल ब्रिंग बैड इंप्रेशन ऑफ दैम। आपको बैड इंप्रेशन नहीं लाना, गुड इंप्रेशन लाना है। एंड हाउ कुड इट बी पॉसिबल व्हेन यू आर गिविंग good impression to people, and it is just possible when you're applying courtesy 100%। जब आप 100% courtesy का इस्तेमाल करेंगे, use expression that show respect, ऐसे expression शो करें जो कि respect को शो करें, ठीक है ना। means that we don't use abusive language, slang words, ऐसे जुमले नहीं इस्तेमाल करेंगे जो कि गाली गलौज वाले हो, जो मोहल्ले में स्ट्रीट लैंग्वेज कहलाती है, उसको इस्तेमाल नहीं करना। बिल्कुल अच्छे अखलाक अखलाक वाले जुमले, एथिकल वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, सही। चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशंस, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, इसको भी याद रखिएगा, सही। सपोज यू थिंक वेल you are discussing with two people and both of them are enemy of one another, so what do you do, आपको उनके समय ऐसे बात करने के बाद दोनों के साथ आपको बेहतर तरीके से बात करनी है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें कि ये मेरा अच्छा दोस्त है ये नहीं है, सो ऐसे नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन क्या करती है, डिस्क्रिमिनेशन अगर आप लाएंगे अपने जुमलों में, अपने एक्सप्रेशंस में, अपने डीलिंग में, so you cannot be called a good businessman or your message will not be for effective message। तो discrimination नहीं करनी, okay? Give respect to each and every customer, give respect to each and every audience। Each and every audience is, you know, just like a guest for you, सही। Yeah, then we have correctness। अब हमारे पास word है correctness। What is correctness? Correctness means that try to yes, use proper grammar। What is proper grammar? Means punctuation, okay, spelling mistakes, okay, and all the grammar which you people have gone through, तमाम grammar जो हमने सीखी है, जिसमें punctuation भी है, capitalization भी है, spelling भी है, comma, full stop, all these are called grammar, okay, modifiers। If you are not using correct grammar, so your message cannot be called vivid message, correct message। तो यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, लेवल आपका सही होना चाहिए लैंग्वेज का। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है सो डोंट यूज इट, सही। अगर आपको लगता है कि वेल आपकी इंग्लिश अच्छी है, सही, लेकिन बेहतरीन नहीं है, सो ट्राई टू यूज योर ओन लैंग्वेज विच यू हैव कमांड, जिस पे आपको कमांड हो। ठीक, एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स, जब आप करेक्टनेस की बात करते हैं तो फिगर्स पे, फैक्ट्स पे, वर्ड्स पे आपको पूरा सही तरीके से कमांड होना चाहिए कि मैं ये एक्यूरेट है, एक्यूरेट फिगर है कि नहीं है। जैसे कि सपोज आज की मैं मिसाल देता हूँ that no, we don't research that what we have been sending to the receivers। हम अपने रिसीवर्स को पता नहीं कौन कौन से मैसेजेस व्हाट्सएप में, फेसबुक पे भेजते रहते हैं, जिसका हमें पता ही मतलब इसकी क्या कहते हैं, बैकग्राउंड क्या है, हकीकत क्या है, सो ये करेक्टनेस नहीं है। फर्स्ट रिसर्च इट, रिसर्च करो उसका कि वो क्या कहते हैं आपके, ये जो फिगर आपने बताए हैं, फैक्ट्स आपने बताए हैं, वर्ड्स जो आप कह रहे हैं, आर दे 100%, 100% और नाउ कि ये 100% सही है या नहीं है, ठीक है। तो मेंटेन एक्सेप्टेबल राइटिंग, जो एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स है, जैसे सपोज मैं कहता हूँ राइटिंग आई एम, ठीक है, तो ये राइटिंग मैकेनिक्स पे नहीं चलता क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही सही नहीं लगाया। समझ तो जाएंगे स्पीकिंग में, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन राइटिंग, सही। थोड़ी बहुत पूरी पूरी इंग्लिश तो सबको बोल लेते हैं, but what you do, you will have to follow the formulas, you will have to follow the scriptures। You, if you don't know the mechanics of writing, so well, don't use it।
बेसिक्स को सीखेगा कि क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, आपको सही तरीके से सीखने के स्ट्रक्चर्स हैं, फार्मूलाज हैं, सही, इसके अलावा पंक्चुएशंस हैं, इसके अलावा आपके पास जितने भी कैपिटलाइजेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं करेक्टनेस में आपको इस्तेमाल करनी है, सीखनी है, तब तक अप्लाई करना है। ओके, द लास्ट थिंग इज कॉल्ड यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। कैसे, चलिए देखते हैं। यूज द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज में क्या है कि फॉर्मल राइटिंग इज एसोसिएटेड विद स्कॉलरली राइटिंग। जब आप फॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं, देखिए, तो इसका मतलब स्कॉलरली राइटिंग। स्कॉलर वैसे हम उर्दू में तो आलिम को कहते हैं, मतलब आला राइटिंग। देखिए, तो डॉक्टोरियल डिजर्टेशन, स्कॉलरली आर्टिकल, लीगल डॉक्यूमेंट, टॉप लेवल गवर्नमेंट एग्रीमेंट, जब फॉर्मल राइटिंग की बात करते हैं। और इनफॉर्मल राइटिंग क्या होती है, इज मोर करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस राइटिंग। देखिए, ये तो खैर मैं आपसे कह दूं कि वेल, बिजनेस demands formal and informal writing, both. Because when you are writing sales letters, so that time you have to be formal. When you are writing sales promotion letters, so that time you will have to be informal with your customer. जब आप formal writing की बात करते हैं तो formal writing कुछ letters में आप लिखते हैं जब आप directors को लिखते हैं या editors को लिखते हैं. But when you are writing sales promotion letter, जब आप अपनी किसी चीज़ को जो नहीं बिक रही या उसको सही तरीके से जो है आप बेचना चाहते हैं, ज़्यादा तादाद में बेचना चाहते हैं, तो उस वक्त आप कस्टमर के साथ क्या करते हैं, आप इनफॉर्मल होकर बात करते हैं, हाय हाउ आर यू डूइंग, तो उस वक्त आपको ये काम करना होता है। तो करेक्टनेस की बात ये कर लेते हैं कि वेल, बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सम वेज, बट अगर आप सेल्स प्रमोशन लेटर में फॉर्मल होकर बात करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा। तो सेल्स प्रमोशन में इनफॉर्मल होना करेक्टनेस है। ठीक है, ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, देन वी हैव मोर फॉर्मल या लेस फॉर्मल की बात करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि फॉर्मल और एब्यूजिव, ठीक है, मोर फॉर्मल और लेस फॉर्मल, मतलब दोनों ही फॉर्मल है, लेकिन एक ज़्यादा है और एक कम है। जैसे पार्टिसिपेट हमारे पास वर्ड है, ओके, वी कैन सी पार्टिसिपेट इट्स फॉर्मल, ओके, मोर फॉर्मल, एंड जॉइन इज लेस फॉर्मल, procure, okay, it's more formal. Get, ये बिल्कुल लेस फॉर्मल नहीं है, हम सब इस्तेमाल करते हैं। endeavor, endeavor, ठीक है, सेम मीनिंग है, ट्राई भी सेम मीनिंग है, बट एक मोर फॉर्मल है और एक लेस फॉर्मल है। यूटिलाइज, ठीक है, एक अच्छा वर्ड है, बेहतरीन वर्ड है, और यूज भी हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास बहुत कॉमन है। इंटेरोगेट, ये भी हमारे पास है। एक्शन, ये भी हमारे पास है। So you can see that what are formal and what are more formal. So what are more formal and what are less formal. You can use all these words in your own language. Okay, and by applying 7 C's, you can be called the best writer or effective writer. देखिए, अगर आप effective writer बनना चाहते हैं, effective speaker बनना चाहते हैं, so that time first thing, कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूं क्योंकि हमने आज चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, तो इफेक्टिव राइटिंग क्या है हमारे पास, व्हाट इज इफेक्टिव राइटिंग। Effective writing के बारे में मैंने आपको बता दी that if you are conveying your message thoroughly, if you're conveying your message accordingly, if you're conveying your message, you know, from the sender's point of view to the receiver point of view, what to do, you will have to be best in writing. I hope that you got it. In tomorrow we will see once more in a same class, okay, with some new things. Hope that you people have enjoyed. Thank you. Allah Hafiz and Assalamu alaikum.